मस्त लगेगा। 309 यूमी कंपनी prepare a flexed budget for Cowley restaurant for the Cowley restaurant. Okay, फ्लेक्स बजट प्रिपेयर करना है भाई, हाथ फुटे होता मी तेच. पड़ेगा. Yes. Yumi Company owns a number of restaurants. It is a well-established company, and its restaurant have gained a favorable reputation for the quality of their meals. Yumi Company's restaurant are all set in rural locations where there is a limited competition, and this enables them to develop a local customer base. Restaurant design their own menus and decor to fit with the requirements of the local market. Yumi Company has been consistently profitable. However, as is the case across the restaurant industry, profit margins are quite low, and there is still a constant need for Yumi to monitor cost. Restaurants में profit margin ज़्यादा नहीं होता है. कम होता One है. of Yumi Company's restaurant is located in the small town of Cowley. Cowley has recently been the location for the filming of a popular television series, and visitor numbers to the town have increased significantly as a result. Yumi Company's restaurant in Cowley has noticed a similar increase in customer numbers. Okay. At the start of the current month, a new restaurant opened in Cowley. The manager of Yumi Company's restaurant in Cowley has expressed concerns about the impact this new competitor will have on their ability to achieve profit targets for the rest of the year. The budget of all Yumi companies restaurant are prepared by the head office. At the start of each year, restaurant manager are given an annual budget, which is split into months. At the end of each month, the manager receives a statement comparing actual monthly performance against budget. The statement of Kavli restaurant for most recent completed month is as follows. Actual budgeted variance. अपने को क्या बोला, प्रिपेयर अ फ्लेक्स्ड बजट, मतलब अपने को एक्चुअल बनाना है ना. हाँ रुक, कुछ नोट्स दिया है. रेंट रेट्स एंड अदर ओवरहेड्स आर अपॉर्शनड टू इट्स रेस्टोरेंट बाय यूमी कंपनीज को हेड ऑफिस बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज. रेंट रेट्स और ओवरहेड्स फिक्स्ड है. All other budgeted costs are treated as variable cost but based on the expected number of customers. Yumi कस्टमर्स. company currently adopts an incremental approach to budgeting. अच्छा, ये बाद में का क्वेश्चन कराएगा क्या? हम्म. ठीक है. Prepare a flex budget for the Kavli restaurant with reference to your answer from part one. Explain the main weaknesses इतने in the. इतने फालतू क्वेश्चंस मैंने अभी देख लिए ना पीएम में, मेरे को जेन्युइनली मन है वापस एक बार एफआर के क्वेश्चंस ये देखने का. कितने पॉइंट टू पॉइंट हुआ करते थे यार एफआर के क्वेश्चंस, तो देखेगा तो. हम्म. और देखो तो ऐसा मिस भी हो रहा है ना, वो सब नहीं यार, ऐसा मैं बैलेंस इतना शीट. मिस, नहीं नहीं, इतना मैं मिस मिस भी नहीं कर रहा मैं. फिर वही देखो तो बहुत ये हो रहा है. रख रख रख. Flex budget for Yumi. तेरा मॉक कब दे रहा है वापस? आज शुरू करने नहीं देगा. कर ले, आज कर ले, मुझे क्या.
राहुल ने दे दिया। पूरा दे दिया क्या उसने? राहुल ने पूरा दिया। हाँ। नाइस। कैसा था उसका? थोड़ा हार्ड गया उसने बोला, बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज्यादा मार्क्स लाना अभी, और क्या, है ना। हम्म। और अपन क्या बोल सकते हैं। यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट प्रिपेयर दिस। एक्चुअली प्रिपेयर करने की जरूरत है क्या? ठीक है कर लेते हैं एक्चुअली प्रिपेयर। एक्चुअल फिक्स। फिजिक्स 100। आज मैं और राहुल एकदम रात को पढ़ने बैठेंगे, तब तू कर लेना मॉक्स। एक एक दे देना, जहाँ पे तुमने छोड़ा है ना, वहीं से कंटिन्यू कर लेना। तुझे आंसर तो नहीं पता ना, तूने आंसर भी देख लिया, सही तो क्यों बस देखो? वहीं से कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो कैसे बनाना है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या करना है? फॉर्मेट कैसे बनाना है? मैं तो कैसे किया है, एक्चुअल बीच में फ्लेक्स बजट और फिर बाजू में ये दोनों बजट्स लिखा है फिलहाल के लिए। मैंने तो क्वेश्चन में ऐसे दिया था वैसा किया है फिलहाल। ओके। कुछ तो रेंट एंड रेट सेम है ना, वो बोल रहे हैं। हाँ। पेमेंट एज इन फिक्स्ड है ब्रो। फिक्स्ड है तो मतलब, क्या फिक्स्ड है तो भी, फिक्स्ड है तो फिर 600 का एक्चुअल में ज्यादा क्यों आया? है फिक्स तो। क्या ये पता था इनका रेस्टोरेंट दोगलापन। इट्स रेस्टोरेंट बाय यूमी कंपनीज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एनुअल चार्ज, इतना ही बोला है तो एडवर्स कैसे आया? ऑल अदर वही तो, बजट इज। यही इनका दोगलापन भाई। टेलिंग यू, दीज डबल स्टैंडर्ड्स। रेंट एंड रेट्स मैं तो एक्चुअल का ही ले रहा हूँ फिर। मेरे को ब्रांड्स नहीं चाहिए दोनों में। हम्म। तो सगळे मला केलं वाट केलं ऐकू ना आगे तर काढून निघेल. चीजो वो देखा है। हाँ। चांगला मनुष्य वाटला ऐकून, ऐकूनच चांगला वाटतं. चल, हाँ। झालं. हो गया वरांस कैलकुलेट हो गया. मराठी की बोल दिया बच्चा बीच में. 309. वो एक्चुअल का जो उन्होंने बोला ना फिक्स रेट, वही गलत होगा, बाकी तो क्या ही गलत होगा अब अपना. 90,000 बराबर है, 27,000 बराबर है, ये भी बराबर है. 37,800 बराबर है, 9,000 बराबर है. ये इसका खाली 12,000 है. ठीक है पता चल गया. मैंने कितना लिखा था? 12,600 लिखा था. और ट्वेल्व उसका थाउजेंड ट्वेल्व क्या? थाउजेंड है. नहीं बजटेड नहीं, ही जो लिया वो तेरा लोग ने। बजट, हाँ बजट ही लिया उन्होंने एक्चुअल. 12,000 से 12,000 वही लिया उन्होंने. तो आता है 1950 एडवर्स. तो परफेक्ट, जो अपने को आया है. लेट्स गो. उन्होंने वर्किंग नोट्स भी किए हैं. अपन ने नोट्स नहीं किए, वो बाद में कभी कर लेंगे एग्जाम के टाइम पे. तो ठीक है. वर्किंग नोट्स में क्या किया है वो लोग ने? कुछ नहीं, उन्होंने खाली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वो उन्होंने वहां पे बताया है, और कुछ नहीं. हाँ। फिर डिफरेंस
With reference to your answer from part one, explain the main weakness in the current monthly budgeted statements i- issued to the restaurant as basis for managing performance. Weaknesses क्या है? Currently adopts an incremental budgeting approach with annual budget figures for each year based upon the previous year's figure. नहीं, year to year बोला है इन्होंने. या मुझे लगा था कि अपन इसका बोल सकते हैं मंथ टू मंथ का, बट नहीं. Yeah, answer part one. Explain the main weakness in the current monthly budget statements issued to the restaurant as basis for the managing performance. करंट इस पे से बोलना है ना वो लोग को, कैसे ये इम्प्रूव अपन ने करेगा। जो क्रिएट किया है वो भी, हाँ. देख, the budgeted cost of food and drinks was 22,500. However the actual नहीं रहे, लेकिन वो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए तो इसलिए वो हुआ है एक्चुअली. हम्म। दैट्स ओके. क्या आता है वो, क्या वीकनेस होगा मेन इसमें? कॉम्पिटिटर के बारे में अपने को बोला था ना, हाँ. क्या उसकी वजह से कुछ होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑन मंथ बेसिस यूमी कंपनी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स that might affect the business, such as the competitors. ये एक है. हाँ हाँ। Or giving discount to customers, special creating special offers. स्पेशल ऑफर। न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया है ना हाँ. इन कावली, तो न्यू होने की वजह से लाइक थोड़ा, चेक करें इवन आंसर इफ इनका. इवन इफ हाँ करना। वो लोग का पुराना रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट का कुछ बोला था क्या, लाइक एक वो फेमस था ना, बट नहीं, उसकी वजह से तो उनके नंबर ऑफ है ना, लेकिन रेस्टोरेंट्स है. हाँ बट नहीं, वही पुराने वाले से तो इम्प्रूव होना चाहिए था ये इसका, लाइक पुराना था अच्छा रिव्यू में, तो इसका इम्प्रूव रहना चाहिए था, तो तभी भी ये हुआ है। अपन नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके बोल सकते हैं हम्म। कि द नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड हैव बीन कितना था, 4.67%. और अभी आया कितने पे? ओ, आया सिर्फ 2%. ये एक पॉइंट है भाई, लेट्स गो. एक पॉइंट मिला. अभी सिर्फ 2% का है. दो का है ना? हाँ एट दो का सेवन ही है। नहीं नहीं, 2250 डिवाइड बाय 87,300, 2.57. वही तो एक्चुअली अभी गिर गया है. दिस डिक्रीज would have been because of the incremental increase in the rent rates and overheads and the increase in staff costs, हम्म। as more staff will be required to handle ये सब. और तो मुझे नहीं पता, कुछ पता चल रहा. ओ भाई इतना एक बढ़ दिया मिनट, है। एक मिनट, मुझे एक पॉइंट जस्ट मिला, मतलब बिना देखे, कि अपना फ्लेक्स बजट के अनुसार अपना अपना एक्चुअली 90,000 का होना चाहिए था. बट बिकॉज हम्म। ऑफ दैट कंपटीशन अपना इतने से हम्म। कम आया है. सो दैट डिक्रीज विल बिकॉज ऑफ द कंपटीशन. बराबर बात है हाँ तूने. भाई। भाई इतना बड़ा आंसर 4 मार्क के लिए. देखते हैं. The most significant weakness in the current performance report is that the original budget is not flexed to adjust the actual numbers of the customers. Sorry यार, अपन ने तो किया था flex यार. The existing report shows that Kauli restaurant has overspent on all its costs, which could be a concern given the importance of cost control in Yumi company. However, the main reason for revenue variance and the cost variance is the fact that number of customers that the restaurant served was 20% higher than budgeted. If the budget is flexed for the actual number of customers, this allows a more
meaningful assessment of the restaurant's performance to be made. Once the flex budget is prepared, it can be seen that revenues were actually lower than would have been expected given the number of customers served, with the average spend per head being 48.5 instead of 50. Acha. Food and drinks were also less than budget. Taken together with the reduction in the average customer spending, this might suggest that some of the items on the menu had been changed since the budget was originally set. ठीक है. Another weakness in Yumi's budgetary control report is the fact that staff costs and heat, light, and power costs are assumed to be purely variable costs, dependent on the number of customers. However, although the restaurant may recruit some temporary staff in busy periods, it is likely that at least some of the staff will be permanent, meaning that it would be more appropriate to treat staff costs as semi-variable rather than variable. हाँ ये अच्छा point है. Similarly, it seems like that there will be significant fixed element with heat, light, and power costs. So treating these as wholly variable does not seem appropriate. काफी अच्छे पॉइंट्स है. लास्ट वाले पैराग्राफ में लास्ट के दो तो किल किए भाई. क्रेजी. अभी discuss whether an incremental approach to budgeting is appropriate for Yumi company. Yumi Company currently adopts an incremental approach to budgeting with the annual budget figures for each year being based on the previous year's figures. However, a new finance director has recently joined the company and they have questioned whether this is suitable for all Yumi's company's restaurants. The new finance director has also suggested that the company should adopt a more participative approach to budgeting. तो पहले तो अपन इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल बजट. बजट. बोल बोल हाँ बोल. वही बोलना था उसका. एक्सप्लेन करना, मतलब ऐसा 2 लाइन में कैसा बोलेगा तो इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच. In incremental budgeting approach, the previous year's budget is being taken and certain adjustments are made in accordance with the inflation or the changes that are required. ओके 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 समझा. हाँ तो पहले अपन उसका पहले Previous पैराग्राफ year में तो previous year budget is considered to be as the base budget. बेस बजट. हाँ. एक है कि अपन पहले थोड़ा सा एडवांटेजेस बोल सकते हैं इंक्रीमेंटल के, कि दो इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच फॉर इज कंसिडर्ड टू बी चीप एंड लेस स्किल्ड लेबर नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेस स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इंक्रीमेंटल बजटिंग और बजट, because of which the cost factor for Yumi company gets reduced, and thus at first glance incremental budgeting might feel appropriate. However, and फिर अपन बुराइयां चालू कर सकते हैं क्योंकि इंक्रीमेंटल खराब ही रहता है यूजुअली. क्योंकि नया कॉम्पिटिटर भी इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में रिसेंटली हम्म. अभी. हम्म. तो उसके वजह से इंक्रीमेंटल अभी अपने को लास्ट ईयर के जो बजट थे आई डोंट थिंक सो अभी ये साल पे काम करेंगे अपने को, क्योंकि पूरा चेंज करना पड़ेगा. बराबर. नॉट एंड बिकॉज. एट दिस. बोल. नहीं बोल बोल तू. नहीं नहीं, तू बोल भाई. मैं बोल रहा था नॉट जस्ट द कॉम्पिटिटर, दूसरे भी एस्पेक्ट्स होंगे बट मेन कॉम्पिटिटर की वजह से अपने को जैसे कि अपना डिस्काउंट्स वगैरह देख के थोड़ा लाइक इधर यहाँ पे पब्लिक को ये अट्रैक्ट करना पड़ेगा वो सब के लिए, तो फिर अपने को थोड़ा इंक्रीमेंटल बजट नहीं हेल्प करेगा लाइक लास्ट ईयर के बजट का इतना. हम्म. बराबर. एक ये भी है कि ये कि दिस इज अ न्यू रेस्टोरेंट. Thus, the हम्म. previous year's budget might not be available. Will not हम्म. be available. Will not be available, and the other restaurants that are owned by Yumi company cannot be taken as base restaurants, and incremental budget cannot be prepared from them. नाइस. ये अच्छा था. उन्होंने यहाँ पे क्या बोले, यूमी कंपनी currently adopt an incremental approach to budgeting with the annual budget figures for each year being based on the previous year figures. तो फिर अभी के लिए तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि अभी तो प्रीवियस ईयर हुआ ही नहीं है.
हाँ ये देख, the new finance director has also suggested that companies should adopt a more participative approach to budgeting, whereas incremental budgeting is not a participative approach towards budgeting, as the budget is only being prepared by taking the previous year's base figures and increments being added accordingly. एक और एक है नहीं कि वो हम्म, पार्टिसिपेटिव बजटिंग वाला आई गेस सी वाला ये है क्वेश्चन के लिए. अच्छा ओके 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 ओ ये देख, डिसएडवांटेजेस में मैं एक बोल सकता हूँ कि certain divisional managers or certain employees or नहीं, certain cost would be wrongly incurred or will be manipulated so that previous year figures are shown at a higher rate and the next year's figure, so that in the next year when incremental budget is actually being prepared, the figures would have an increment of the previous year figures. हम्म. समझा? थोड़ा हो सकता कॉम्प्लिकेटेड है. था मैं समझाने में, बट नहीं नहीं समझा. हाँ समझाना चेक करें चेक बोलो तो. पड़ेगा. अच्छा. Under an incremental budgeting approach, the current year's budget and result are taken as the starting point for preparing the next year's budget. The budget is then adjusted for unexpected changes, for any expected changes, such as the impact of inflation on cost and prices, the sales growth or decline. The main advantage of the incremental approach is that it is a relatively straightforward way for a preparing a budget, appropriate for organizations which are operating in relatively stable environment. The locations of YUMI companies, restaurants away from significant competition suggest that the operating environment is relatively stable, meaning incremental budgeting is appropriate. Similarly, the fact that Yumi Company appears to have a relatively well established brand and customer base suggests that using an incremental approach to budgeting future revenues appears reasonable, even if it is difficult to identify some changes which need to be adjusted for in the next year's budget. However, one of the major disadvantages of incremental budgeting is that it does not provide any incentive to make operations more efficient or economical. If the current peer figures include slack or inefficiencies, then using them as a start point for the next year's figures means that inefficiency is automatically perpetuated into the next year. Yeah, into the next year. Yeah, अच्छा point था अभी. Such an approach seems somewhat inconsistent with the focus on the cost control within Yumi company. If the company is worried about its relatively low margins, then an approach to budgeting which challenges cost more critically, such as zero-based budgeting or activity-based budgeting, might be more suitable for helping to down, drive down cost. For example, the highest cost is the staff wages, which could be analyzed, and Yumi company could investigate making changes to its staff modeling to reduce cost and or improve efficiency. As mentioned in part A, where whether labor cost and heat, light, and power vary proportionately with number of customers debatably with the number of customers appear debatably. If Yumi Company's incremental budget ignores the relationship between activities and costs, then ultimately the budget will provide Yumi Company's management with little relevant information or managing costs. This could become an increasingly important issue if competition in Yumi companies makes in markets intensifies. Yumi companies market intensifies. ठीक है. हम्म. काफी अच्छे पॉइंट्स थे टू बी ऑनेस्ट इंक्रीमेंटल बजटिंग हम्म. के. ये जो स्लैक का पॉइंट था वो अच्छा था, स्लैक एंड हाँ वो. इनएफिशिएंसी बी कैरीड फॉरवर्ड, ये मैं भूल गया था. स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है इंक्रीमेंटल बजटिंग, ये तो पता था. उसके बाद ये सच एन अप्रोच सीम समवॉट
inconsistent with the focus on cost control with यूमी कंपनी, बिकॉज ये लोग कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इन लोग को जीरो बेस्ड वेटिंग या फिर एक्टिविटी बेस्ड वेटिंग लेना चाहिए था। बात सही थी। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच टू बजटिंग एंड एक्सप्लेन potential advantages and disadvantages in introducing this approach at Yumi company। अपने जस्ट डिस्कस किया था कि मैनेजर्स विल बी मोटिवेटेड, दे हैव बीन हाँ, गिवन द। सीनियर मैनेजर और लाइक पार्टिसिपेटिव रहेगा तो फिर मैनेजर्स जो जो लेवल के मैनेजर्स वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग को खुद ही टारगेट सेट करेंगे तो खुद को अचीव करने बेटर रहेगा, कंट्रोलेबल रहेगा। डिसएडवांटेजेस मैंने मैंने एक देखा था कि इजी टारगेट सेट करेंगे टू गेन बोनस वगैरह, वो बोनस, सब था। बराबर। और भी थे 2-3 पॉइंट, कितने मार्क्स, 7 मार्क्स का है भाई, ये भी बहुत बड़ा रहेगा आंसर। Potentially that the time consumed in participative budgeting would be higher, and thus हाँ, it would be costly. Thus it would be costly. They स्टाफ might स्टाफ कम्युनिकेशन inaccurately। चाहिए रहेगा। क्या क्या? स्टाफ कम्युनिकेशन चाहिए रहेगा। हाँ, स्टाफ कमीशन चाहिए रहेगा। हाँ, मैंने एक और पॉइंट देखा था कि देयर माइट बी सर्टेन disconcerns amongst the staff, and thus there might be certain invisible disputes that between the staff, thus leading to inefficiency in the organization। लीड टाइम बढ़ेगा, यस राइट। हम्म, ये भी बहुत बड़ा आंसर है यार। Thus, the current budget process is a centralized top-down process, meaning that the managers from Yumi companies' restaurants do not have any opportunity to influence the budgets for their restaurants. By contrast, in a participative approach, the managers of each restaurant would be able to influence the figures for their restaurant rather than having budget target is simply imposed on them। Involving the manager in the budgeting process should help there to make budgets more effective and realistic। अरे मैंने लास्ट टाइम ये बहुत रियलिस्टिक मैं अब भूल गया। The the local manager should have a greater understanding of the environmental factors and the operational constraints which will influence the performance of their restaurants. For example, the manager of the Kauli restaurant will have a better understanding of their customer and market conditions, and thus provide a greater insight into the potential impact of the new restaurant than a member of the finance team at Yumi Company's head office would have। Similarly, the managers are more likely to be committed to achieve a budget if they have been involved in creating it। बराबर, not least because their involvement in the preparing the budget should help to ensure that they feel the budget figures are realistic। However, involving the restaurant manager in the budgeting process is likely to make it more time consuming। For example, instead of running their restaurant, managers will have to spend time in meetings with head office staff, planning and preparing their budgets। In this respect, it may be more appropriate for Yumi Company to maintain the current top-down process for the restaurants which are operating in a stable environment, and where the insights from local managers will add little value, but introduce a more participative approach for restaurants like Kauli which are facing a period of change। अच्छा, इनका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये लोग ना पॉइंट को एक्सप्लेन भी ऐसा करें फ्रॉम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी और द रेस्टोरेंट। हाँ समझ रहा है वो ऐसा। Another potential advantage of participative budgeting is that managers may try to influence budgets so that their targets can be achieved easily। जो जो पॉइंट तूने बोला, by doing this a restaurant's performance compared to budget will appear to improve, but this would actually be an illusion। One of the main issues Yumi could face is this in this respect is that given the range of different locations of its restaurants, it will be difficult for the head office staff to know whether individual managers are setting targets which are easy or challenging if the restaurants are if the restaurants were similar or in similar locations, it would be easier to compare the figures suggested by individual managers to assess how challenging or not they are। अभी लास्ट वाला, similarly the managers are more likely to highlight issues which will lead to reduction in their budgeting targets। उन्होंने वहां उसी एक पॉइंट को बहुत खींचा है, rather than ones which increase their targets। For example, the managers at Kauli
has highlighted that the new competitor will make it more difficult for them to achieve the target. However, the manager does not appear to have made a corresponding acknowledgement that the increased number of visitors to Cowley could support an increased revenue target. बराबर ये पर उसने बोला नहीं है. There is a danger that the manager's participation in the budgets could lead to the targets becoming less challenging, which in turn could affect the Yumi company's competitiveness and the profitability. यस, बिगर काफी अच्छे पिक्चर में पॉइंट्स. क्या क्या. कंपनी को बिगर पिक्चर में बहुत अफेक्ट करेगा. हाँ. इजी राइट. अवेलेबल